Hello everyone, this is Yogita and you're watching English Finishing School। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी ईडियम्स की। ह्यूमन बॉडी ईडियम्स यानी कि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड ईडियम्स। बट बिफोर वी मूव अहेड, इतना जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ईडियम्स होते क्या हैं। मैंने आपको फूड ईडियम्स के वीडियो में भी ये बताया था कि ईडियम्स क्या होते हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और फूड ईडियम्स के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। फ्रेंड्स, ईडियम्स इंग्लिश में ऐसे एक्सप्रेशंस को बोला जाता है जिनका मीनिंग उनके लिटरल मीनिंग से टोटली डिफरेंट होता है। अब लिटरल मीनिंग का मतलब है कि जो उस एक्सप्रेशन के अंदर वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग उनका मीनिंग नहीं होता। So let's look at this example and we'll understand it better. If I say pull your socks, pull your socks का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जुराबे खींचो। Pull your socks का मतलब है get ready for something. Sometimes your teacher tells you at the time of exams, pull your socks, your exams are coming near. A physical education teacher in the playground can well say during a sports meet, pull your socks, the race is going to start. So this is how pull your socks has entirely got a different meaning which is not according to the words used in that expression. Now let's talk about human body idioms, that is the idioms related to the parts of body. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ह्यूमन बॉडी idioms की जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड हैं। But before we move ahead, don't forget to subscribe our channel and click on the bell icon to get all the updates about our future videos. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बॉडी ईडियम है I am all ears, जो कि हमारे ears से रिलेटेड एक्सप्रेशन है। So that is why it is a part of body idiom. इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि मैं आपकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, उत्सुक हूँ, ईगर हूँ। So that is how you can use I am all ears. मान लीजिए किसी मॉर्निंग असेंबली में, बच्चों के स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में कोई मोटिवेशनल स्पीकर आने वाला है एंड द चिल्ड्रन आर वेरी एक्साइटेड to listen to that speaker, so they can well say we are all ears, we are very excited to listen to him. And in a normal classroom, when the teacher is saying are you listening to me, the students can say yes ma'am, we are all ears. That means we are very excited to listen to you. So I am all ears, मैं आपकी बात को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट बॉडी ईडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि इसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब कुछ भी आपसे गलती हो जाती है, नॉर्मल एक सिचुएशन में घर में अगर बच्चे से कुछ टूट जाता है और ममा इज़ एट होम एंड पापा विल कम इन द इवनिंग, तो ममा कैन ऑलवेज से टू द चाइल्ड you have broken this remote, papa will come home in the evening, then you have to face the music. That means to face the unpleasant consequences of your action which you have done wrong. Next body idiom है heart of gold, which means सोने का दिल, और इसका actual elaborated meaning है a very kind hearted person. Let's understand with an example. A famous celebrity named Sonu Sood has helped the society during this corona pandemic. He has helped the needy people reach homes and the injured people have their surgeries and many more. The list is endless. So we can well say about this famous personality that Sonu Sood has a heart of gold. Keep fingers crossed. इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि कुछ अच्छा होने की उम्मीद रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, सो यू कैन वेल यूज दिस एक्सप्रेशन, माई रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी आउट एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड. दैट मीन्स आई एम होपिंग टू हैव समथिंग पॉजिटिव. लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट इडियम, ऑन योर टोज. इस एक्सप्रेशन का मतलब है किसी भी अपकमिंग सिचुएशन के लिए तैयार रहना और अलर्ट रहना. For example, if there is a tension at the borders and there is a possibility of enemy attacking, the army personnel can guide the Jawans, direct the Jawans saying, be on your toes, enemy can attack anytime.
Take the example of a school situation. There is a principal in a school and the teacher in classroom is directing the students not to talk and be quiet, or else teacher can say, be on your toes. The principal can come on round anytime. So this is how we have discussed about parts of body idiom starting from the top to the bottom. And stay tuned with us for many more such videos, and also write us in the comment section what more videos you would like to be recorded on idioms of your choices. Thank you for watching. Subscribe our channel, hit the like button and click on the bell icon for all the updates out of future videos.